Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Moneyflow Mindset. Moneyflow Mindset सीरीज में आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज एपिसोड नंबर 2 जहां पे हम लोग आपके माइंडसेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड वी आर आल्सो गोइंग टू वर्क अपॉन योर मनी माइंडसेट whether it is in terms of technical aspects or it is in terms of psychological aspects. And last episode was based on goal setting जहां पे हमने काफी कुछ डिस्कस किया था on why most of the people fail in order to set and achieve their goals, as well as on the other hand there are a lot of top performers and high performers in this world जो epic framework का यूज करके जो हमने लास्ट एपिसोड में ही डिस्कस किया था how they actually set goals for themselves and they achieve those goals within that particular specific time frame or even beyond those goals whatever they set for themselves, whether it is in terms of health, wealth, relationship, career, spirituality, community, and so on. And I hope that now you're absolutely clear with what are your goals, at least in the area of money, because ये सीरीज जो है हम मनी के बारे में अंडरस्टैंड करने वाले हैं. एंड मैंने ये चीज भी बताई है दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द वीडियो इज ऑल अबाउट, अगर आप हेल्थ, रिलेशनशिप और बाकी सब एस्पेक्ट्स के बारे में भी अंडरस्टैंड करते हो, दैट्स ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन. बट एज दिस इज द सीरीज स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन मनी, तो हम लोग सिर्फ पैसों के बारे में डिस्कस करेंगे, हम उनके एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, because I've realized this one single thing that money, this topic is one of the most important yet most underrated when it comes to Indian geography and so on. हमारे जो डिनर टेबल कॉन्वर्जेशंस होते हैं वो काफी कम फैमिलीज या फिर काफी जैसे गुजरातीज हो गए, मारवाड़ीज हो गए, सिंधीज हो गए, सो देर आर वेरी फ्यू कम्युनिटीज इन इंडिया जहाँ पे डिनर टेबल कॉन्वर्जेशन ओपनली पैसों के बारे में होते हैं. बट मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज एंड मोस्ट ऑफ द यू नो कैटेगरीज वहां पे डिनर टेबल कॉन्वर्जेशंस पैसों के बारे में नहीं होते हैं. एंड दैट्स व्हाई the young generation and even the millennials and so on, they suffer a lot when it comes to money, their psychology, and irrespective of what their background is, they are unable to achieve the goals which they set for themselves because उनका जो blueprint है, जो framework है mindset का, वो set नहीं होता है. And इस particular series के through हम लोग उसको properly set करने वाले हैं. Right, so in this particular episode, we are actually going to dive deeper into one of the psychological aspects on how we can actually attract abundance of money in our life. And let's begin with money flow mindset episode number 2, जहां पे आज हम beliefs के बारे में बात करने वाले हैं. And beliefs are nothing but जो चीज पे हम विश्वास करते हैं. Right, so belief is nothing but, let's assume there's a guy who is a rich, right, let's assume he is healthy, he is rich, उसके relationships काफी अच्छे हैं with respect to his own self, then his wife, family, and everybody around him. तो उस इंसान को देख के दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं. एक पर्सपेक्टिव ऐसे हो सकता है कि यार ये इंसान कैसे रिच बना, उसने काफी लोगों की हेल्प की होगी, ही माइट हैव वर्कड ऑन हिमसेल्फ एंड सो ऑन. तो ये पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हुआ. वेर एज द सेकंड इंडिविजुअल, वो काफी क्रिब कर सकता है, वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स बोल सकता है कि ये पर्सन ने काफी कुछ रॉन्ग किया होगा, किसी को चीट किया होगा, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया होगा, दैट्स व्हाई ही इज able to become that much rich, and that's why he's able to invest on his health, on his relationship, and so on. Right, so इंसान एक है, वो सिचुएशन एक है, बट पर्सपेक्टिव अलग अलग है depending on the mindset, whether it is positive or negative. And in this video we are going to talk about some of the negative money beliefs which a lot of people have unconsciously, जिस वजह से वो अपनी लाइफ में वेल्थ बोलो या पैसा बोलो, in terms of richness and so on, they are unable to achieve it. Right, so let's have a look at couple of negative money beliefs which a lot of people have. As I already mentioned, they are unconscious money beliefs, यानी कि वो आपने खुद से इंस्टिल नहीं किए हैं, but there's a possibility that आपके सराउंडिंग्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, या फिर आपके जो टीचर्स होंगे, आपके जो कलीग्स होंगे, उनके थ्रू आपके अंदर ये इंस्टिल हुए हैं. एंड दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप में भी यही नेगेटिव बिलीफ्स होंगे. There's a possibility that आप में और कोई negative money beliefs हो, but these are some of the most common money beliefs which I observed in a lot of people. Right, so let's have a look at all of those beliefs one by one, and at the end I'm also going to give you one solution. Right, so first negative belief which a lot of people have is money is hard to earn. उनका ऐसे बिलीफ बन जाता है कि यार पैसा अगर बनाना है तो हमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है, हमें दिन में 15-15 20-20 घंटे काम करना होगा, then only we'll be able to make that particular money. एंड कहीं ना कहीं ये जो बिलीफ होता है ये हमारे पेरेंट्स से हमारे में इंस्टिल होता है कि लेट्स अज्यूम जब हम उनको बोलते हैं कि मुझे ये चीज खरीदनी है, उसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए. सो व्हाट अ लॉट ऑफ इंडियन हाउस डू, व्हाट अ लॉट ऑफ इंडियन पेरेंट्स डू अनकॉन्शियसली, वो बोलते हैं कि
पहले तू पैसा कमा के देख कितना हार्ड है पैसा कमाना, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रियल वैल्यू ऑफ मनी. Right, I hope that you are also able to understand and resonate with this particular statement, because this is what a lot of people face unconsciously itself. And again, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके अंदर ये बिलीफ जो है वो काफी टाइम से इंस्टॉल हुए हैं, बिकॉज यू नो पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्सो वी हैड दैट माइंडसेट कि हमें यहाँ से बचना है, सर्वाइवल वाला माइंडसेट था. एंड दैट्स व्हाई हमारे में जो है वो फ्लरिशमेंट वाला जो होता है ना, कि लाइक हम अबंडेंस के बारे में सोचें, हम लोग एकदम एक्सपोनेंशियल लेवल के बारे में सोचें, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते, बिकॉज हम हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने वो फेज देखा है, स्ट्रगल वाला फेज देखा है, सर्वाइवल वाला फेज देखा है. एंड दैट्स व्हाई दे हैव आल्सो instill that particular belief in themselves unconsciously. एंड वो बातों ही बातों में हमारे अंदर में आ जाता है, हमारे माइंडसेट में भी वो फिक्स हो जाता है. राइट, सो फर्स्ट इज नथिंग बट मनी इज हार्ड टू अर्न. सेकेंड इज दैट रिच पीपल आर ग्रीडी और सेल्फिश. जैसे कि मैंने कुछ मिनट्स पहले ही बताया विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जाम्पल, इंसान एक है बट पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है. सो द नेगेटिव पर्सपेक्टिव अबाउट अ रिच पर्सन इज दैट कि वो इंसान काफी सेल्फिश है, काफी ग्रीडी है. वो बंदे ने काफी नाइंसाफी की होगी, बहुत सारे लोगों के साथ चीट किया होगा. दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज रिच राइट नाउ. एंड कहीं ना कहीं दैट इज आल्सो वन ऑफ द अनकॉन्शियस बिलीफ इटसेल्फ. राइट, सॉरी, that is one of the negative belief which is present in our unconscious mind or subconscious mind, whatever you call. Right, third is that I'm not good with money. राइट, कहीं ना कहीं लेट्स अज्यूम इफ यू आर डूइंग अ जॉब, इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, और आपका स्ट्रगल वाला फेज है जहां पे आप हार्डवर्क तो बहुत ज्यादा कर रहे हो, पैसे आ भी रहे हैं, बट अल्टीमेटली बाय एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ यू आर अनएबल टू सेव even very small amount of money for yourself, or you are not able to invest even on your self learning or your self care or whatever you call it. So that is why a lot of people mention themselves that I am not good with money. एंड वही जो बिलीव्स होते हैं वो बार बार रिपीट करते हैं, ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट्स, वो बार बार रिपीट करते हैं. एंड अल्टीमेटली उनका ये बिलीफ बन जाता है और वो उस पर विश्वास करने लग जाते हैं that yes, no matter how much amount of hard work I do, I won't be able to make that amount of money. No matter what happens, rich people are greedy or they are selfish. No matter what happens, no matter like जितने भी मैं स्प्रेडशीट्स बना लूं, no matter how many programs I attend, still I'm not good with money. राइट, सो इन चीजों पे वो अनकॉन्शियसली विश्वास करने लग जाते हैं बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस व्हिच दे हैव. राइट, एंड फोर्थ इज दैट आई डोंट डिजर्व अबंडेंस. और ये जो अबंडेंस वाला फैक्टर है ना, दैट कम्स विद सेल्फ वर्थ. बहुत सारे लोग जो है ना खुद को डाउनग्रेड करते हैं. वो व्हेन इट कम्स टू सेल्फ लव, वो बोलते हैं कि why should I love myself? How can I say this statement to myself that I love you right in front of mirror? And how can I look into my eyes? How can I express love to my own self? Love is for somebody else, not for our own self. That's what their beliefs are all about. ऐसे वो सोचते हैं. And that's why उनका जो self worth है वो automatically down चले जाता है. And they have this particular mindset that I don't deserve abundance. राइट, जब तक आपको अपना सेल्फ वर्थ नहीं पता है, अल्टीमेटली यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट अबंडेंस इज ऑल अबाउट. वो फेस कैसा होता है, वो इमोशंस क्या होते हैं हमारे अंदर, एंड जो हमारा माइंडसेट क्या होता है एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दोज अपॉर्चुनिटीज, द पीपल अराउंड अस, पॉजिटिव like positive minded people around us and positive aspects, everything, it's just at the next level. Because abundance यानी कि there's no lack of anything. किसी भी चीज पे कोई restrictions नहीं है. हर चीज बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक, जहां तक अनइमेजिनेबल लेवल होती है ना. अबंडेंस यानी कि बेशुमार पैसा, राइट. अबंडेंस ऑफ लव यानी कि बेशुमार प्यार, एंड सो ऑन. राइट, सो इन दैट वे अ लॉट ऑफ पीपल, they don't love themselves, the they don't have that clear benchmark that what is my real self-worth, and that's why they have got instilled with this belief that I don't deserve abundance. एंड अगेन, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे जो बिलीफ्स होते हैं वो अनकॉन्शियसली हम लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं, एंड उस पर हम लोग बेस्ड ऑन आवर एक्शंस हम उस पर विश्वास करने लग जाते हैं, एंड दैट बिकम्स आवर लाइफ. Right, but again we'll break those particular negative beliefs in next few minutes, so don't worry about it. And last but not the least, which is most common, is that a lot of people have this belief that more money equals to more problems. Because काफी सारे टीवी सीरियल्स होते हैं, काफी सारे मूवीज होते हैं जहां पे ये बताया जाता है कि irrespective of how much amount of money they have, still their families are facing a lot of problems, whether it is with respect to health or with respect to relationships or with respect to any other area of life. सो दैट्स वाई अनकॉन्शियसली हमें ये बिलीफ बन जाता है कि जितना हम पैसा बनाएंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हम अट्रैक्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ आवर हेल्थ, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ लाइक डिजीज और एनी अदर थिंग्स, और इन टर्म्स ऑफ आवर रिलेशनशिप्स. बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप्स हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का डिवोर्स हो जाता है,
एंड दैट्स व्हाई ये बिलीफ हम में इंस्टॉल हो जाता है दैट द मोर अमाउंट ऑफ मनी वी मेक द मोर प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू अट्रैक्ट। एंड जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वी वर्किंग रियली वेरी हार्ड, वो सेकंड सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है दैट let's assume I'm working really very hard, so my body, my subconscious mind will not accept more amount of money. Why? Because हमारा ये strong belief बन चुका है that जब मैं ज्यादा पैसे बनाऊंगा I'll ultimately attract more problems. And as a human being हमारा एक ही mindset होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें problems में नहीं फंसना है. And that's why a lot of people don't attract more amount of money in their life, and ultimately they don't attract abundance and they don't go to the next big level, right? So I hope that now you're absolutely clear. And जैसे कि मैंने बताया, these are 5 most common negative money blocks or negative beliefs. There is a fair possibility that और भी आपके अंदर negative beliefs हो सकते हैं. So all you have to do is follow this particular home assignment which I'm giving you right now, and after this particular home assignment आपको कोई घाई नहीं करनी है. You have to sit in silence and you have to take a notebook and a pen, and you have to note down all the things which I'm mentioning, right? So the first thing which you have to do is spot the limiting belief जो आपको रोक रहा है. एंड ये जो लिमिटिंग बिलीफ पे काम करना है, ये एक झटके में नहीं हो जाता है. आपको ये वीडियो 2-3 बार देखना पड़ेगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, एंड देन यू विल हैव टू स्पॉट द लिमिटिंग बिलीफ जो आपको तभी के तभी ही मिलेगा जब आप साइलेंस में बैठोगे, जब आप खुद के साथ बैठोगे. यू विल सिट विथ योर थॉट्स एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई एम आई फेसिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ये लिमिटिंग बिलीफ कौन सा है जिस वजह से मैं इस एरिया में अटका हुआ हूं, वेदर इट इज विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और एनी अदर एस्पेक्ट, राइट? सो द स्टेप नंबर 1 is going to be that you have to spot the limiting belief. Step number 2 is that you have to write down the origin, कि ये origin कहाँ से आया है. क्या वो आपके खुद के एक्सपीरियंस से आया है, या वो आपके मदर से आया है, या वो आपके फादर से आया है, और एनी अदर फैमिली मेंबर्स, योर सिबलिंग्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स और from anybody else, right? So you have to write down the origin. Then you have to challenge that particular limiting belief with a positive belief. And now we have chat gpt and many more AI tools. So all you can do is straightforward take the limiting belief. Let's assume I don't deserve abundance, right? तो आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है. यू हैव टू मेंशन that this is the negative limiting belief which I have. Now change this, and आप उसके हिसाब से अपना प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो, that create a new positive belief so that I can attract abundance of money in my life, right? तो उस हिसाब से आप अपने प्रॉम्प्ट के साथ भी खेल सकते हो, because what usually happens is बहुत सारे लोग जब नेगेटिविटी फेस करते हैं तो उनको पॉजिटिव वर्ड्स याद ही नहीं आते हैं, राइट? let's take an example of word helpless. बहुत सारे लोगों को लगता है that I am helpless, but exact opposite of it is helpful. but जब लोग helpless feel करते हैं उनको यही नहीं पता होता है that उसका opposite helpful है, right? So all you have to do is you have to work on your beliefs, and you can actually take help from ChatGPT in order to create your positive belief which will actually help you attract abundance of money in your life, and actually able to it will help you to go to the next potential level, right? So the third step is nothing but challenging the limiting belief. Fourth is to rewrite the positive belief. जैसे कि मैंने बताया, if you know the exact opposite of it, exact opposite of that negative statement, then you can create that positive belief on your own. If not, then you can take help from AI or chat gpt or whatever you call it, right? And last but not the least is that you have to repeat that particular belief every morning along with some action, because this is what I've learned from my mentors and even through a lot of podcasts and books, that जब भी हम किसी बिलीफ को खुद के अंदर इंस्टिल करना चाहते हैं, all we have to do is reframe that particular belief in a positive manner, and we have to start taking small actions so that हमारा जो माइंड है, हमारी जो बॉडी है, वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करने लग जाए दैट यस, ये पॉजिटिव बिलीफ है एंड दिस इज व्हाट माय न्यू लाइफ इज ऑल अबाउट. एंड वंस यू स्टार्ट बिलीविंग दैट, जब आप विश्वास करने लग जाते हो दैट यस आई डिजर्व अबंडेंस, आई अट्रैक्ट अबंडेंस, तो अल्टीमेटली जब आप एक्शन लेते हो, सो यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग स्मॉल रिजल्ट्स. एंड जब स्मॉल रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, आपका जो माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो अल्टीमेटली विश्वास करने लग जाता है दैट यस नाउ आई डिजर्व अबंडेंस. अब चाहे कुछ भी हो जाए, इवन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, इवन विद स्मार्ट वर्क, आई कैन अट्रैक्ट अबंडेंस. इवन बाय वर्किंग 2, 4, 6 hours a day, I can attract more results than the person who is working for 10, 15, 20 hours a day. Right? So again, you have to do this particular activity. जैसे कि मैंने बताया, you have to take like a notebook and a pen, and you have to note down all of these things. And one thing which I would like to mention is that
आप ऐसे भी कर सकते हो दैट every day when you wake up in the morning, if you wish, then you can challenge one belief for next 7 days. Then you can challenge another belief for 7 days, then next for 7 days. Then all you have to do is पहले आपको अपना belief note down करना है, negative belief. Then you have to note down the positive belief, positive abundance वाला जो belief रहेगा. And then you also have to note down the small actionable step, positive actionable step which you took in that particular day, सो दैट आपका जो पॉजिटिव बिलीफ है वो और स्ट्रांग हो एंड जो आपका नेगेटिव बिलीफ है वो और वीक हो एंड अल्टीमेटली इट गेट्स ब्रेकन डाउन and you have a new positive belief instilled in yourself, right? So I hope that you have got absolute clarity about what beliefs are all about, and now you're absolutely clear on how you can actually attract abundance in your life. And if you have any of your doubts about beliefs, make sure you mention those doubts in the comment section, and I would be more than grateful to figure out all your doubts as well. And जैसे कि मैंने सारे आपको steps भी बताए हैं, if you are unable to understand the positive aspect, the positive belief, you can take help from ChatGPT, you can take help from any other AI tools as well, in order to reframe that negative belief into a positive one, so that you can start taking your next step and you can start attracting abundance in every aspect of life, whether it is with health, wealth, relationship, spirituality, community, or any other aspect as well, right? And I hope that now you will do this particular activity. We have next 7 days, जब तक अगला एपिसोड हमारे YouTube चैनल पर लाइव हो. In the meantime, you have to do this particular activity, and if you haven't yet set your goals, you can do that particular activity as well. But make sure आप हर वीडियो के साथ उनके जो actionable steps मैं बता रहा हूँ, you have to do those activities. Otherwise, just watching these videos, it's not gonna make sense. And if possible, आप चाहे तो हर 2 दिन में ये वीडियो फिर से देख सकते हो, and you can crystallize your positive beliefs so that you can attract that money flow mindset for yourself, right? And I hope that you're going to do that, and I'll see you in the next episode of Money Flow Mindset. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.